Rahim students, you are watching Learning Space by Irfan, and this is Irfan Fareed. So, in today's video, we are going to talk about the questions and answers of Chapter 1 of second year's English. Chapter 1 is The Dying Sun. इसकी लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसकी जो एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है उसको डिस्कस किया था. आई होप आप लोगों को डिटेल चीज़ें समझ आई हों. अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and you can always write your feedback in the comments or through the like button. So anyhow, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग ली थी. आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. सो वी कैन टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस. नाउ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट. कल जब हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में बेसिकली, जिसमें हमने इस पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ली थी, उसके अंदर हमने देखा था कि एक स्टार जो है दूसरे स्टार के करीब क्यों नहीं आता. तो द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन इज़ बीइंग आस्क्ड बाय द एग्जामिनर. वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एक स्टार जो है दूसरे स्टार के करीब नहीं आता अपने थ्रू आउट अपनी लाइफ साइकिल के अंदर. सो कल हमने अपनी रीडिंग के दौरान और कॉम्प्रिहेंशन के दौरान एक पैराग्राफ्स में आपको आइडेंटिफिकेशन दिखाई थी कि ये रीज़न्स हैं कि यहाँ पे जो यूनिवर्स है उसके अंदर स्टार्स जो हैं एक दूसरे के करीब नहीं आते. सो इफ़ वी मूव टुवर्ड्स द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, दीज मिलियंस ऑफ स्टार, यहाँ से ऑनवर्ड्स, दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वैंडरिंग अबाउट इन स्पेस. अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स which journey in company, but most of them travel alone. And they travel through a universe so immense that it is very rare in event indeed for one star to come anywhere near to another. So technically इसका जो आंसर है वो इन लाइंस के दरमियान मौजूद है कि एक सितारा दूसरे सितारे से इतने ह्यूज डिफरेंस के ऊपर होता है कि एक सितारे का दूसरे सितारे के करीब आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. तो यहाँ से हम ये जो मैंने मार्किंग की है, यहाँ से हम इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हियर वी गो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वैंडरिंग स्टार वैंडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन. ऑलराइट, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास जो थर्ड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है, नहीं सॉरी थर्ड पैराग्राफ, हियर वी गो. वी बिलीव हाउएवर, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इट इज़ द आंसर टू क्वेश्चन 2, 3 and 4 ऑफ द एक्सरसाइज. इसकी एक समराइज्ड फॉर्म में अगर हम इसका एक आंसर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वहाँ से हमें आइडिया होगा कि ये जो आंसर है ये हमारा क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 तीनों के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि तीनों क्वेश्चंस मोर और लेस द सेम हैं. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू जेम्स जीन्स अ वैंडरिंग स्टार वैंडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन. अब ये एक जेनेरिक क्वेश्चन है, इसके अंदर कहीं पे कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन या इंडिकेशन नहीं है कि आपने इसका आंसर किस स्टेज तक करना है, कि प्लैनेट्स की एग्जिस्टेंस से पहले तक इसका आंसर आएगा या प्लैनेट्स की एग्जिस्टेंस के बाद तक इसका आंसर आएगा. सो दिस इज़ जस्ट अ जेनेरिक क्वेश्चन जिसके आंसर में कंप्लीट डिटेल्ड एक समरी उस पूरे इवेंट की आ सकती है. That a wandering star came near the sun, it applied its tidal pull on the surface of the sun, which raised tidal wave on the surface, and it converted into a huge mountain that we cannot even imagine. As the wandering star came nearer and nearer, the mountain got bigger and bigger, and eventually the mountain was torn off into pieces, and those pieces were thrown away into the space, and those pieces are revolving around the sun ever since they were thrown off from the surface of the sun. So these pieces are called the planets, right? So एक summarized form में इसका आंसर, वो पैराग्राफ जो आपके सामने है, थर्ड पैराग्राफ, उसके अंदर तीनों क्वेश्चंस का आंसर अवेलेबल है. थर्ड क्वेश्चन था, what happened when the wandering star came nearer and nearer. So इसका भी वही आंसर है कि जब सितारा करीब से करीब आता गया तो क्या हुआ. और द फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट आर द प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस.
सो तीनों क्वेश्चंस जो हैं इनकी आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, और आप इनको इन आंसर्स को इस थर्ड पैराग्राफ के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. Right? We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place. You don't have to write it word to word. इसको जो है वो आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा इसका लगाने की ज़रूरत नहीं है. You just have to get the concept and write it from your own. Right? सो सेल्फ राइटिंग करना सीखें, और उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें आपको सेल्फ राइटिंग जो है वो सिखाएँगे, so that you will be able to answer the questions from your own without even cramming anything. Just grasp the concept and you will really be able to answer anything. अगर आपको किसी चीज़ के बारे में एक जनरल नॉलेज अवेलेबल है तो you will be able to answer it properly. So ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चंस, उनका आंसर हमने डिस्कस कर लिया. राइट, अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे. वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स. अब हमने इस चैप्टर के रीडिंग के दौरान एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ली थी कि देयर आर सर्टन कंडीशंस दैट नीड टू बी फुलफिल्ड फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट एनीवेयर. राइट, जिसमें एक टॉप मोस्ट जो कंडीशन है इट इज़ ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है हमें इन ऑर्डर टू सर्वाइव. ना टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ना ही टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए. स्टार्स जो हैं दे आर एक्सट्रीमली हॉट, एंड बाय द वे ये आपको 4th पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे स्टार्ट पे द सन एंड दी अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, फार टू हॉट फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दैम. ठीक है, ये टेक्निकली उसका आंसर है जो 5th क्वेश्चन है आपका उसका. राइट, सो नाउ मूविंग on to 6th question of the exercise. Here we go. Write a note in the beginning of life on the earth. Right, so that's a very simple question. You just have to write down a brief history according to the science के ज़िंदगी का आगाज़ इसका ज़मीन में कैसे हुआ था. राइट, सो इसका आंसर हमें इसी 4th पैराग्राफ के अंदर से मिलेगा, और हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि ये कैसे हुआ. ठीक है जी, ये हमारे पास जो सेकंड इसकी लाइन है, सेकंड सेंटेंस है यहाँ से ऑनवर्ड्स. सो ऑल्सो नो डाउट वेयर द पीसेज ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर. यहाँ से ऑनवर्ड्स बेसिकली हम कंसिडर कर लेते हैं. थर्ड जो सेंटेंस है इसका, gradually they became cooler until now they have very little heat of their own left, their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. In course of time, one of these cooling pieces gave birth to life. We do not know how, when, or why this happened. It started in simple organisms whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. But from these humble beginnings came a stream of life which, growing ever more and more complex, has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and the religions in which there lie their highest hopes and the noblest desires. So technically इस पैराग्राफ के एंड तक जो है इसी क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन हमें इसको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट हैव टू राइट इट इन आवर ओन राइटिंग, इन आवर ओन थ्रू आवर ओन माइंड. अब आप इसकी समरी एक एक्सट्रैक्ट कर लें. ठीक है, इस पूरी स्टोरी की कि द प्लैनेट्स दैट वर थ्रोन ऑफ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सन, दे इवेंचुअली स्टार्टेड टू cool down and they didn't have any heat of their own left, and one of these cooling pieces gave birth to life. Science doesn't know why, when, or how did it happen, but science believes that it somehow accidentally happened, that one of these cooling pieces gave birth to life. And it was initially very simple organisms whose living power mainly consisted in them being able to reproduce themselves before dying, and later on they started to evolve according to the environment and the ambience, and eventually we can see them in the form of modern human beings and all. This is how the life began on the earth according to the author, right? So इस तरह से हम अपने एक समराइज्ड आंसर जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको जो है हम अपने अल्फाज में लिख देंगे.
अच्छा, बाय द वे आई विल बी अपलोडिंग द नोट्स टू द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और बाकी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके नोट्स भी मैं अपलोड कर दिया करूँगा। उसका मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वहाँ से आप जो है उनके स्टैंडर्ड आंसर्स वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते, वो निकाल सकते हैं वहाँ से। बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप सेल्फ राइटिंग अपनी इम्प्रूव करें, ख़ुद से आंसर्स एक्सट्रैक्ट करें और उनको अपने अल्फाज में लिखना सीखें। ये दिस विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। अदरवाइज़ अगर आप इनको क्रैम कर लेंगे स्टैंडर्ड आंसर्स को, तो आपको फ्यूचर में उसका कोई हेल्प नहीं होगी उससे। Anyhow, moving on to the seventh question: why is the universe of which our Earth is a part so frightening? Give as many reasons as you can. And now we are going to move towards the fifth paragraph for the answer to this question. And the fifth paragraph is basically about the beginning of life and the feelings of the human beings and the topmost feeling of fear which we have, right? So ये जो fear वाली feeling है उसको यहाँ पे discuss किया गया, and इसमें different kinds of fears को discuss किया गया। Our first feeling is, यहाँ से अगर मैं इसको read out करूँ तो you will be able to extract the answer. Our first feeling is something like fear. We find the universe frightening because of its immense distances. So पहली reason हमारे पास आ गई immense distances की, which we do not understand. Frightening because of the stretches of time. Second reason आ गई, stretches of time so great that we cannot imagine them. Making the whole human history so very small in comparison. इतना huge time period है और उसके अंदर इंसानों की तारीख इतनी छोटी सी है, ये second reason आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद थर्ड रीज़न है फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आर एक्सट्रीम लोनलीनेस, हमारी जो लोनलीनेस है उसकी वजह से, एंड बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस ऑफ आर होम इन द स्पेस। हमारा जो प्लानट है बिल्कुल अकेला है स्पेस में, इस जैसा हमें और कोई प्लानट नज़र नहीं आता। अनदर रीज़न फॉर आर ह्यूमन रेस बीइंग अफ्रेड, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फाइनल रीज़न है वो है फ्राइटिंग बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन ऑफ लाइफ like our own exists anywhere in it except on the earth, ठीक है। तो ये चार रीज़न्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, ठीक है। इन्हीं को हमें ब्रीफ करके थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके अपने हिसाब से लिखना है, राइट। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज़, what in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? Right. तो टेम्परेचर बेल्ट्स का जो जिक्र था यहाँ पे हम उनका जिक्र करेंगे, राइट। स्टार्स जो हैं वो बहुत हॉट हैं, ठीक है, और इनके गिर्द जो है वो कुछ टेम्परेचर बेल्ट्स होती हैं, ठीक है। ये कंडीशंस जो है ना, ये यहाँ से हमने इनको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अवे फ्रॉम द फायर देयर इज स्टिल अनइमेजिनेबल कोल्ड, ठीक है, 100 डिग्रीज ऑफ फ्रोस्ट, तो वहाँ पे लाइफ फ्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर जो है ना हमने एक्सप्लेन करना है टेम्परेचर बेल्ट्स का, साथ में यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और सिंपल हमको लिविंग कंडीशंस, मेनली जो चीज़ रिवॉल्व कर रही है वो टेम्परेचर की रिवॉल्व कर रही है, राइट। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए कि ना तो हम बॉयल हो जाएं उसके ऊपर, मेल्ट हो जाएं, और ना ही जो है ना हम फ्रीज़ हो जाएं। सेकेंडली द कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन, द कंडीशन ऑफ वाटर, सॉयल, ये बेसिक कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हैं for the life to exist in any other heavenly body. And in our opinion ये जो bodies हैं ये exist apparently साइंस के मुताबिक नहीं करती हैं, राइट। यहाँ पर एक रफ कैलकुलेशन जो है वो शो करवाई थी, if added together make up less than 1,000 millions part of the whole space, and even inside them life must be very rare, for it is extremely unusual. ये जो लास्ट लाइन है, probably one star in 100,000 planets, 100,000 has a planet going around it, ठीक है। ये एक पॉसिबल कैलकुलेशन है टू शो कि शायद कोई हेवनली बॉडी ऐसी एग्जिस्ट करती हो जहाँ पे जिस तरह की लाइफ के बारे में हम जानते हैं वो एग्जिस्ट करती हो, राइट। सो दीज वर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 ऑफ सेकेंड ईयर इंग्लिश। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आती है तो यू कैन like it and share it with your friends, and you have to subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications for
every video that is being released on this channel. Besides this, as I promised, मैं इंशाल्लाह कुछ जो है ना टाइम में एक लिंक्स जो है वो वीडियोस में ऐड करूँगा, जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर्स जो हैं वो इन चैप्टर्स के जो है ना स्टैंडर्ड आंसर्स वो मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप उस लिंक के थ्रू उनको एक्सेस कर सकेंगे. ठीक है. सो until the next video, please take care of yourselves and the people around you, and see you guys in the next video. Till then, Allah Hafiz.